Hello dear students, how are you all? So I'm back with a new chapter, chapter number 2, drawing tools in Animate. Okay, so here you can see learning in this chapter, starting Adobe Animate. First of all, हम Adobe Animate को start करना सीखेंगे, saving the Animate document, setting documents properties, opening an Animate file, and Animate tools and exiting Animate. So Animate आप सब aware होंगे, animations को help कर animation को बनाने के लिए इस application का use किया जाता है. So let's explore it. Here we will learn about the Adobe Animate, which is the most popular animation software used for creating animated games, cartoons, text, graphics, and other special effects. Okay, so first of all, let's see how to start Adobe Animate. Starting Adobe Animate. To start Adobe Animate, follow the given steps. Step number 1, you have to click on the start button, click on the Adobe folder, and click on Adobe Animate. Here you can see. So this is the Adobe Animate. Okay, now click on ActionScript 3.0. So after that you will be able to see this one. Here, can you see that? Let me change the color so that you can see it. Okay, so this is the ActionScript 3.0. You have to click here and animate window components. So after doing this, you have to click on this create button. आपका ये जो workspace area है open हो जाएगा. Now let's see animate window components. So the animate has the following components: menu bar, tools panel. Okay, these are frames. Here you can see the frames, and after that layers. Okay, just remember it, and timeline, stage, where you can see all the work happening, and properties panel on the right side. Okay, now let's see menu bar. It gives access to all the commands available. Tool panels. The tool panels contains tools that help in drawing, coloring, and modifying objects. You can select one tool at a time and use it on the stage or work area. Some of the tools available in the Flash are selection tool, free transform tool, lasso tool, text tool, line tool, pencil tool. Some tools also contain some modifier for the selected tool. These modifiers used to change the properties of the selected tool. अब स्टूडेंट्स टूल पैनल क्या है? टूल पैनल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे आपको आपके सारे टूल्स मिलेंगे टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क. ओके, सो हियर did you know any shape we draw consists of two properties: the stroke line color and the fill color. Fill and stroke are treated as separate objects. We can select fill and stroke separately to move or modify them. So you will explore it when you will do the practical. Okay, so you will be able to understand it very well. Now frames. So frames are small slices of time that are combined and played back in sequence to create animation. So basically बच्चे जो आपको frames होता है वो small slices होते हैं किसके? टाइमिंग के, जो कि combine किए जाते हैं और एक sequence में क्या किए जाते हैं? रन किए जाते हैं. So layers are like the transparent sheets stacked one over the other, each containing different images. Each layer contains its own timeline with endless frame. अब बच्चे लेयर क्या होता है? ट्रांसपेरेंट शीट्स होती हैं. ओके, इसकी वजह से आप डिफरेंट लेयर पे वर्क कर सकते हो वेरी इजीली, और आपका काम जो होता है वो मैस भी नहीं होता और कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता. टाइमलाइन. द टाइमलाइन इज यूज्ड टू सेट द सीक्वेंसिंग एंड टाइमिंग ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ अ फ्लैश मूवी. इट कंसिस्ट ऑफ टू components, frames and layers. Stage. The white rectangular area in the center of the window is known as the stage. All the animation objects and scene for a flash movie are created in the stage. An object is any graphical feature drawn on the stage: text, circle, square, rectangle, lines, etc. The gray area surrounding the stage is called the work area. We can create and edit objects in the work area also, but they will not be visible in the final movie. Now properties panel. So it is used to modify the properties of the selected object. Some of the common properties are: stroke color is the outline color of the object. Okay, here you can see color and style. Okay, properties panel में आपके पास कुछ चीजें हैं जिसे आप क्या कर सकते हो? मॉडिफाई कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को ऑन द स्टेज. ओके, and fill color is the color filled inside the object, and stroke height is the width of the stroke, and stroke style is the style of the stroke. Now quiz mania, where does all the action take place in Adobe Animate? Obviously on stage. Okay, now let's move forward, and here you can see all the things which we can see here.
stroke color, fill color, stroke height, and stroke style. So this is how you can modify it. Okay, so now let's see setting documents properties. To modify the properties of a Flash document, I mean Adobe document, Adobe Animate document, follow the given step. So click on the modify from the menu bar and choose document option. The document setting dialog box will open. Set background color, stage size, width, cross height, etc. and click on OK button. So अगर आपको अपने documents की properties को change करना है, so how will you do this? To modify it, you can click on the menu bar. आपको menu bar पे click करना है और document option को choose करना है. Okay, here you can see आपने डॉक्यूमेंट ऑप्शन ने चूज करना है. कहाँ पे क्लिक करने के बाद? मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद. उसके बाद आप देखेंगे कि आप यहाँ पे विड्थ को सिलेक्ट कर सकते हैं, हाइट को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड ओके पे इजीली क्लिक कर दीजिए. Now, after that, you can see the size of the height and the width has changed. Okay, this is how you are going to set the document properties. Is it clear? Now let's see animate tools. So there are a lot of tools. So let's look at the tools panel. So the very first one is selection tool, then lasso tool, fluid brush tool, after that eraser tool, line tool, pen tool, and let's see all of them, okay, one by one. Paint bucket tool, asset trap tool, and hand tool, bone tool, camera tool, 3D rotation tool, paint brush tool, free transform tool, classic brush tool, rectangle tool, text tool, eyedropper tool, zoom tool, width tool, bind tool, 3D translation tool, and pencil tool. So let's explore them, okay, one by one. So first is your text tool. Text tool is used to type text on the stage. To use the text tool, follow the given step. Click on the text tool on the tool panel, okay, and change the font and font size, text color from the properties panel, and click on the stage and type your text. So how are you going to do this? First, you have to select the text tool and you can change the properties of the text tool, and finally you can just go on the stage and type your text. Next is your line tool. So line tool कैसे work करेगी? Line tool is used to draw lines on the stage. Okay. So to use the line tool, follow the given step. So पहला क्या करना है आपको? Click on the line tool. कहाँ पे? Tool panel पे. Change the stroke color, stroke style, and stroke height from the properties panels, and drag the mouse on the stage and draw. So आपको यहाँ पे पहले लाइन टूल को सिलेक्ट करना है, प्रॉपर्टीज को चेंज करना है, एंड देन यू आर रेडी टू ड्रॉ योर लाइन. नेक्स्ट, रेक्टेंगल टूल. सो रेक्टेंगल टूल को एक्सप्लोर करते हैं. रेक्टेंगल टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स. टू यूज द रेक्टेंगल टूल, फॉलो द गिवन स्टेप. First, click on the rectangle tool, change the stroke tool, stroke style, and fill color from the properties panel. Drag the mouse on the stage and draw the shape. अब rectangle tool का obviously आप rectangle को draw करने के लिए use करोगे. So first select the tool and you can just change the stroke color, stroke style, and fill color from the properties panel, and you are ready to draw your rectangle on the stage. After that, polystar tool. So polystar tool is used to draw polygons and stars. The number of sides in the polygon or number of points in the star can be from 3 to 32. Here you can see this is the polystar tool, okay, which is found inside the rectangle tool. Okay, so here let me just zoom it and you can see this mark. Okay, so you have to click here and then you will be able to get all of these options. Now to draw a polygon, follow the given steps. Click on small arrow on the rectangle tool and choose polystar tool. Click on options button in the properties panel. So मैंने आपको जैसे बताया था, आपको अपने rectangle tool के right bottom side में एक small क्या दिख रहा होगा, arrow दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है. आपको कुछ options दिखेंगे, उसमें से क्या करना है, polystar tool choose कर लेना है. Here you can see, and from the फिर उसके बाद आपके पास प्रॉपर्टीज पैनल है, उसमें से जो ऑप्शन मॉडिफाई करने हैं, मॉडिफाई करने के बाद फ्रॉम द डायलॉग बॉक्स चूज पॉलीगन और स्टार, एंटर द वैल्यू बिटवीन 3 and 32 and drag on the stage to draw the polygon or star. So here you can see, so just let me
टेल यू। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्लिक करने के बाद जिसमें क्या बोला गया है आपको, आपको प्रॉपर्टीज पैनल में ऑप्शंस बटन पे क्लिक करना है। ओके, देयर आर ऑप्शंस बटन। इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, फ्रॉम द डायलॉग बॉक्स चूज अ पॉलीगन और स्टार। सो उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल रहे हैं पॉलीगन और स्टार। उसके बाद आपको नंबर मेंशन करके क्या करना है, आपको अपना पॉलीगन ड्रॉ करना है। नाउ लेट्स सी द पेंसिल टूल। सो पेंसिल टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ freehand lines. This tool has three possible modifiers: smooth, straighten, and ink. To use the pencil tool, click on the pencil tool. Okay, click on the pencil tool and select any modifier from the bottom of the tool panel. For example, smooth. Now drag the mouse on the stage and draw freehand line. So how are you going to do this? So first you have to select the pencil tool from the tools panel. Then you can see here you have three options, that is straighten, then after that you have smooth and ink. So you can choose any one of them and after that you can draw on this stage. Okay, working area. Now brush tool. So brush tool is used to draw an object with freehand thick lines. When the brush tool is selected, three modifier icons, brush size, brush shape and brush mode appear at the bottom of the tool panel. So brush size is used to select a brush, okay, size of a brush. Brush shape is used to choose a shape of the brush and brush made is used to change. Okay, let's read it again. So brush made is used to choose a mode for applying stroke. There are 5 modes. Okay, paint normal mode paints over line and fill areas. Paint fill mode paints fill and empty areas without affecting the lines. So paint fill mode paints fills and empty areas without affecting the lines. Paint behind mode paints blank area of the stage without affecting the lines and fill areas. So paint selection mode paints only selected fill area. Paint inside mode paints only the fill area, leaving the outside the stroke. So let me explain all of these things again. So जो आपका ब्रश टूल होता है वो क्या करता है, आपको किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने में हेल्प करता है फ्री हैंड, विद अ फ्री हैंड थिक लाइंस। ओके, सो ब्रश टूल जब आपका सिलेक्ट होता है तो आपके पास 3 मॉडिफायर आइकन्स होते हैं बच्चों। एक होता है ब्रश साइज, ब्रश शेप एंड ब्रश मोड। ओके, सो ब्रश साइज क्या करता है, आपकी ब्रश की साइज को चेंज करता है। ब्रश शेप आपकी ब्रश की शेप को चेंज करने में हेल्प करता है। और जो ब्रश आपका मोड है उसमें बच्चों आपके पास 5 टाइप ऑफ मोड्स पाए जाते हैं। पहला है पेंट नॉर्मल मोड, जिसमें आपका क्या होता है, ओवर द लाइंस एंड जो फिल एरियाज है उन दोनों पे वो क्या करता है, वर्क करता है। बट इन केस ऑफ पेंट फिल मोड fills and empty areas without affecting the lines. Okay, here you can see this is paint fills and after that paint behind mode क्या करता है, paints blank areas of the stage without affecting the lines and fill areas. So basically ये क्या करता है, आपके वर्क एरिया में जो ब्लैंक एरिया है वहां पे ये क्या करता है, पेंट करता है और जो आपका लाइन है और फिल एरिया है उस पे ये कोई इफेक्ट नहीं करता। पेंट सिलेक्शन मोड पेंट्स ओनली सिलेक्टेड एरिया और पेंट इनसाइड मोड क्या करता है, सिर्फ फिल एरिया को पेंट करता है, बाहर वर्किंग एरिया में जो उसका यू कैन से द एम्प्टी एरिया, this mode is not going to use it. So to use brush tool, follow the given step. Click on the brush tool, choose a color from the properties panel and choose brush mode, brush size, brush shape from the tools panel and drag the mouse over the stage. अब बच्चों आपको इसको यूज कैसे करना है, पहले आपको ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है, आपको उसके बाद प्रॉपर्टीज पैनल में जाना है। हियर यू कैन सी आफ्टर सिलेक्टिंग द ब्रश टूल यू हैव टू गो टू द प्रॉपर्टीज पैनल। यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैनल में आपको क्या करना है, ब्रश मोड को सिलेक्ट करना है बाय क्लिकिंग ऑन दिस वन। सो यू आर गेटिंग दीज 5 मोड्स, यू कैन सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम एंड ड्रैग द माउस ओवर द स्टेज। Now let's see paint bucket tool. So paint bucket tool is used to fill an object with color. To use paint bucket tool, follow the given steps. Draw the shape and click on paint bucket tool. Choose a color from the properties panel and click inside the shape you want to fill. So paint bucket tool नाम से समझ में आ रहा है बच्चों, is used to fill an object with color. Okay, so here you can see
how are you going to use it? So पेंट बकेट टूल को यूज करने के लिए पहले आपको से क्या करना है, आपको एक शेप को ड्रॉ करना है और उसके बाद पेंट बकेट टूल को सिलेक्ट करना है टूल्स पैनल से। फिर आपको प्रॉपर्टीज पैनल में जाके क्या करना है, कलर को चूज करना है। कलर को चूज करने के बाद आपको इस शेप के अंदर कलर को फिल कर देना है। Now let's see ink bottle tool. Ink bottle tool is used to change the outline, color, style and thickness of existing shapes. To use the ink bottle tool, follow the given step. So click and hold the paint bucket tool and select ink bottle tool. So students, how are you going to select it? So जैसे ही आपने पेंट बकेट टूल आपने यहाँ से यूज किया था, वैसे ही आपको जब आप उसके स्मॉल एरो पे क्लिक करोगे आपको मिलेगा इंक बॉटल टूल। इंक बॉटल टूल पे क्लिक करने के बाद आपको रिक्वायर्ड सेटिंग करनी है फ्रॉम द प्रॉपर्टीज पैनल एंड देन यू कैन इजीली मॉडिफाई द आउटलाइन ऑफ द शेप। ओके, now let's move forward and here eraser tool. Eraser tool is used to remove or erase just like a normal eraser. When the eraser tool is selected, three modifier icon, eraser mode, eraser faucet and eraser shape appear at the bottom of the tools panel. Eraser mode is used to choose a mode of the eraser, a mode for the eraser. There are 5 modes. And eraser faucet is used to erase entire line or fill with a single click. And eraser shape is used to choose a shape for the eraser. Now here you can see eraser normal mode erases all the objects on the stage on which you drag the eraser. Eraser fill modes erase only fills with lines remaining unaffected. Eraser line modes erases only lines but the fills remain unaffected. And erase selected fills mode erases only selected fills with line and unselected fills remain unaffected. And erase inside mode erases only the fill on which you start erasing without the stroke. I mean you start without erasing the stroke. So बच्चों बेसिकली इसका मतलब क्या है, इरेजर टूल जो होता है आपको अगर कोई पार्ट इरेज करना है आपके ऑब्जेक्ट का, देन यू कैन यूज इरेजर टूल। ये नॉर्मल इरेजर की तरह वर्क करती है। 3 आइकन्स बच्चों मॉडिफायर आइकन्स होते हैं, एक इरेजर मोड, इरेजर फॉसेट एंड इरेजर शेप। इरेजर मोड बच्चों 5 मोड्स प्रेजेंट है। फॉसेट में आप क्या कर सकते हो, इज यूज टू इरेज एंटायर लाइन और फिल्स विद अ सिंगल क्लिक। ओके, और इरेजर शेप में आप अपने शेप चूज कर सकते हो किसकी, इरेजर की। नाउ इरेजर मोड में बच्चों 5 टाइप्स ऑफ मोड्स दिए हुए हैं, यहाँ पे उन्हें एक्सप्लेन करा हुआ है कि वो कैसे वर्क करते हैं। टू यूज इरेजर टूल फॉलो द गिवन स्टेप। फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द इरेजर टूल एंड choose eraser mode and eraser shape from the properties panel and drag the mouse over the image to erase it. So this is basically how it works. Select it and property panel से आप उसे modify कीजिए and basically use कीजिए। Now let's see saving the animate document. We can save an animate document using its current name and location or using a different name and location. So animate files are saved with .fla extension. After that, to save a animate document, follow the given step. अब बच्चों जो आपका animate document है आप उसे सेव कर सकते हो। सेव कैसे करेंगे, आप current name और location, ठीक है, मतलब जब आप सेव करेंगे तो बेसिकली आपको फाइल नेम देना होगा। Here you can see and you can also check out the extension that is .fla. Okay, now to save a animate document, follow the given step. Select file, save as option. A save as dialog box will appear. Give a suitable file name and choose a location where is it to be saved. Now click on save button. So this is how basically it is going to work. Now if you want to open an animate file, to open animate file, follow the given step. Click on the file menu again and you will see the open option. Here you can see this and the open dialog box appears. Choose the required file and click on open button. Now how are you going to do this? So basically you have to go to the location where you have saved your file. Okay, after going there you have to locate your file and just select it and click on open button. Now let's see exiting animate. To exit animate, follow the given step. Click on the file menu and click on exit option. आपका जो application है वो बंद हो जाएगा. Let's see the vocabulary. Stage is the white rectangular area in the center of the window. Work area is the gray area surrounded the stage and object is any graphical feature drawn on the stage. Clear?
Now, in a nutshell, the Adobe Animate is the most popular animation software used for creating animated games, cartoon, text, graphic and other special effects. So Adobe Animate काफी ज़्यादा famous है, most popular animation software है, चाहे वो किसी भी type का animation हो. Text tool is used to type the text on the stage. Line tool is used to draw line on the stage. Rectangle tool is used to draw rectangle or squares. Polystar tool is used to draw polygons or stars. Pencil tool is used to draw freehand tools, and brush tool is used to draw an object with freehand thick lines. Okay. Paint bucket tools is used to fill an object with color. Ink bottle tool is used to change the outline, color, style and thickness of the existing shapes. Eraser tool is used to remove or erase just like a normal eraser. And animate files are saved with a .fla extension. So these are the points which we have already covered in the chapter. So I hope आपको ये सारी चीजें clear हैं. अब आप क्या कर सकते हैं, tools को easily use कर सकते हैं, अपने objects को create कर सकते हैं, property panel से properties को क्या कर सकते हैं, modify कर सकते हैं, file को save कर सकते हैं, right students? So that's all for this chapter. Sorry. So that's all for this chapter, students. I hope you have understood all the concepts. Now what are we going to do? You have to exercise you have to solve the exercise after check your knowledge. Okay, so that's all for this chapter. Now I'm gonna meet you in the next lecture with a new chapter. Just revise the chapter, try to do a practical, okay, and keep learning and keep exploring. Bye bye students.